Welcome, namaste. Please be welcome to our ceremony today. My name is Jan Krlina. I'm the Global Public Affairs Lead for Inca Centers, and I'm so happy and proud to be here today alongside my colleague Mohit from IKEA Retail India to celebrate the unveiling of our first meeting place in Uttar Pradesh. At Inca Centers, we are passionate about bringing people together, and it's really fantastic to be here with all you today in the region known as the beating heart of India. Absolutely, Jan. I'm Mohit Bansal, Public Affairs Lead at IKEA Retail. It's so exciting to be here today to celebrate this great milestone, and this will be our first IKEA store in the state of Uttar Pradesh. A very warm welcome to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, who will soon join us virtually from Lucknow. Honorable Minister for Industrial Development, Export Promotion, NRI Affairs, Government of Uttar Pradesh, Shri Nand Gopal Gupta ji. His Excellency, the Honorable Ambassador of Sweden to India, Mr. Jan Teslev, Mr. Lokesh, Noida Authority CEO, other UP government officials, our business partners, construction partners, co-workers, and friends from media. Today is actually a really important moment for both our businesses. It's a moment that reflects our collective commitment to the Indian market. As we work towards the completion of our joint development here in Noida, we are so excited for the chance to create a better everyday life for the local community and, of course, contribute to the further growth of this lively and dynamic area. But Mohit, before we hand the stage to our very, very special guests, I think it's time to explain a little bit the relationship between our two businesses, because we keep talking about, you see both logos all around. So how does it work? Yeah, no, that's important, Jan. So IKEA Retail and Inca Centers are both part of the Inca Group. And as such, we share the same vision to create a better everyday life for the many people. Across the world, both IKEA Retail and Inca Centers join hands to create the best experience for our community. IKEA India has been operational in the state of Telangana, Maharashtra and Karnataka apart from our online operations. And we are offering home furnishing solutions here, and which we are delighted to bring those goods and services to the Delhi NCR market, along with world-class shopping and leisure experiences with our colleagues at Inca Centers. Yes, Mohit, indeed, we are looking forward to learning from your experience in operating India, which is impressive, so that we can shape this new meeting place, which is actually over there hiding, to shape this meeting place to the real needs of our local communities. So, we have said meeting place many times already. What is it? What is it that we are unveiling today? Is it a shopping mall? Is it a retail destination? Is it a mixed-use development? Yes, it's all of this, but there is much more. So what is this meeting place and how is it connected to IKEA? Let's check that out. Operating meeting places all around the world. And we are so much looking forward to welcoming more than 25 million visitors here in Likli Noida meeting place. And they will join the 352 million visitors which come to us and our partners all around the world each year. Thanks, Jan. Coming back to the state of Uttar Pradesh, amongst all Indian states, UP is already the third largest economy and growing at a very, very rapid pace. A big credit of that goes to the state's industry minister who is with us today. Sir, we met you in Lucknow during the Investor Summit and we witnessed for ourselves how your team has been working relentlessly to make UP a choice destination for investors. And we had a fruitful experience, ourselves working with the various authorities including Invest UP, Noida Authority, the Environment Department, the Power Department, and various other departments, with whose help we have reached this great milestone today. I request the Honorable Minister to address the gathering. Please welcome Shri Nand Gopal Gupta ji, Honorable Minister for Industrial Development, Export Promotion, NRI Affairs, and Investment Promotion, Government of UP. सर्वप्रथम IKEA केंद्रीय इस समारोह में
वर्चुअल माध्यम से उपस्थित उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं के केंद्र, प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि के शिल्पकार, हम सब के अगुआ कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित भारत में स्वीडन के राजदूत श्री जॉन थैस लेब्जी, आइकिया की सीईओ सुसान पुलवर जी, ग्लोबल एक्सपेंशन हेड स्टीन हाइलविन जी, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ श्री एम लोकेश जी, एसीओ श्री संजय खत्री जी, पब्लिक हेड अफेयर के आइकिया इंडिया के पब्लिक हेड अफेयर हेड श्री मोहित बंसल जी, प्रदेश सरकार और आइकिया के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, यहाँ उपस्थित जनमानस, इस संस्था से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नोएडा के विकास की किताब में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। आइकिया का यह केंद्र अपनी विशिष्ट डिजाइन और सुविधाओं के कारण एक लैंडमार्क के रूप में स्थापित होगा। मैं इस अवसर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सदस्यों और नोएडा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दुनिया में एक नई पहचान के साथ खड़ा है। इस नई पहचान के मूल मंत्र में ही परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस और प्रोडक्टिविटी समाहित है। आज का ये भूमि पूजन समारोह भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को लगभग हर एक दिन, हर नए दिन नई सफलता मिल रही है, नई सफलता हासिल हो रही है, नई ऊंचाइयां जुड़ती जा रही है। इस दौरान अनेक परियोजनाओं ने एमएयू से लेकर के ग्राउंड ब्रेकिंग, इनॉग्रेशन और प्रोडक्शन तक का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि 2028 में आप इसको लोकार्पित करेंगे, लोगों के लिए समर्पित करेंगे। मेरी शुभकामना है कि इसमें कोई भी रुकावट ना आए और हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर, औद्योगिक विकास की टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर रुकावट को दूर करते हुए इसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 2028 तक इसको चालू कराने में पूरा सहयोग देंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। हम हर इंटेंट के साथ अपना कमिटमेंट जोड़ते हैं और यही उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का राज है। आज आगाज तो सब लोग कर लेते हैं अच्छा, लेकिन हमने अंजाम को भी उतना ही महत्व दिया है जितना आगाज को। निश्चित रूप से आइकिया केंद्र की इसी परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लगभग 5500 करोड़ के निवेश से विकसित होने वाला यह केंद्र एक बहुआयामी संभावनाओं के प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित होगा। इस परियोजना में आइकिया का एक रिटेल स्टोर,
होटल, कार्यालयों के लिए स्थान, शॉपिंग सेंटर आदि उपलब्ध होंगे। यह केंद्र क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर सृजित करेगा। लगभग 9000 युवाओं को रोजगार की संभावित है। आइकिया और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक साझेदारी रही है। प्रदेश के तमाम हुनरमंद कारीगरों और शिल्पकारों को आइकिया के माध्यम से देश दुनिया में बाजार उपलब्ध हुआ है। कालीन, टेक्सटाइल, डेकोरेशन, मटेरियल जैसे अनेक उत्पादों को विश्व के तमाम देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा और ईडा उत्तर प्रदेश के 100 विंडो की तरह विकसित करना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है। यही कारण है कि यह क्षेत्र विश्व स्तरीय डाटा सेंटर, फिल्म सिटी सेंटर, जेवर एयरपोर्ट जैसी विशाल परियोजनाओं के माध्यम से प्रगति और समृद्धि की नित्य नई कहानी गढ़ रहा है। बदले परिवेश में और सुरक्षित निवेश की गारंटी पर देश दुनिया के निवेशकों का भरोसा और विश्वास आज का ये भूमि पूजन इसी समारोह की इसी भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Minister, a big thank you for enlightening us. You mentioned how, with the leadership of Honorable Prime Minister and the Honorable CM of UP, Uttar Pradesh has done all-round development. You also touched on how the state's growing infrastructure, progressive policies, the ease of doing business have all contributed big time under your leadership and department. You also outlined the key initiatives UP has taken, which has made it one of the favorite places for investors. And particularly when you mentioned that our project will be one of the pride of the state, so big thank you for that. And you also assured that how UP government will be a key partner for us and how our project would contribute to the state's economy. I don't think it leaves with any doubt with anyone that UP will be poised for exceptional growth. Thank you, Honorable Minister. Thank you very much indeed, Honorable Minister, for being with us today. Thank you so much for your kind words. And now it's time to welcome on the stage Mr. Sebastian Hilving, who's the Expansion and Development Director of Inca Centers. Sebastian, please welcome. Fantastic honor. This is a truly special moment for myself and everyone at Inca Centers around the world. We cannot wait to create an exciting environment for the Noida community. Today's announcement marks an important moment in our global expansion journey. We continue to open new meeting places around the world to reach more of the many people in their local communities. At Inca Centers, we're passionate about creating every better day lives for the many people. This means sharing places that meets the true needs. So while our places always anchored by IKEA stores, they're also co-created with local communities to ensure they are unique to their desires and their needs. We strive to create the right environment for local businesses to offer their products and services, where people can engage with their favorite brands and ultimately where they can be inspired by spending quality time with their friends and family in a community space. That's exactly what we're creating here in Noida. Through an investment of over 5,500 crores, we're creating a community destination where everyone feels welcome to have fun, to experience new things and share moments together. We also believe that it's good business to be good business.
That means something to reduce the impact on our planet and also address the growing threat of climate change. At Ingka Centres, we're dedicating to helping Noida deliver on its net zero climate action plan by making it easier for the people of Noida to embrace sustainable living at home. So nature, sustainability will be the heart of Lycklig Noida. It's been designed to incorporate the best-in-class technology that will optimize water and energy efficiency. Lycklig Noida is a hugely exciting opportunity for us and our partners to bring the many new experience to the people of Uttar Pradesh and the Delhi NCR. Today marks the start of a special relationship between Ingka Centres and the many people of Noida. We cannot wait to create a retail-led, mixed-use destination that will inspire the people of Noida to shop, work, eat, live, and play. The concept of Lycklig Noida, fast city, slow city, that blends the convenience and the access of the daily needs with the opportunity to relax and recharge. It will include everything a true communal space should have, from community garden to outdoor fitness area, a playground and walking and cycling paths. We're designing Lycklig Noida to ensure it positively contributes to the lives, well-being and development of Noida for generations to come. Lycklig Noida will also become an iconic piece of architecture that combines Indian and Scandinavian cultures. It reflects the harmonious confluence of the two rivers with a powerful sense of belonging represented by the banyan tree. And of course, the famous simplicity of IKEA will also run through this development, creating a unique Scandi Indian feel that will be memorable for all its visitors. We look forward to start working with Noida's local communities, authorities and partners to co-create a modern urban destination that complements the city's dynamism. We're committed to bring value to the community and to the planet. Thank you so much. Wow, that was exciting. Thank you, Sebastian. It's so good to hear all the new experiences you'll be bringing to the community here and what it means for business and for the region. Thank you so much. And now if I may request Sebastian and Susan Pulver, CEO and Chief Sustainability Officer IKEA India, to join Sebastian in welcoming the Honorable Chief Minister. So good morning, and I want to extend a warm to the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We are very honored to have you part of this ceremony. Over to you. Namaste. Now it's my absolute pleasure to invite Susan Pulver to address us and to talk what this occasion means for our business and the region. Thank you so much for the opportunity. And I start with the incredible India, the masterpiece of Uttar Pradesh. I've been able to see a couple of times and I want to see it more times. This is really a unique masterpiece, and now we are hoping we will not create a Taj Mahal, but something that we all will feel proud of and that will benefit the many people of Uttar Pradesh and Noida. You have heard a little bit about Ingka Centres and a bit about IKEA, and now I will take you a little bit deeper into
into IKEA and what we stand for as a company. So it was founded in 1943 with our Ingvar Kamprad, an entrepreneur in the Swedish Småland, the forest, and he created the legacy we are today building on. In 1986, we came to India, so we have almost 40 years of experience of doing sourcing in this beautiful country. And 2018, we started our retail. So we are on a journey. As you can see, it's not a short-term relationship. We are building for the future. And this is a great milestone today when we are inaugurating our second big mixed-use project together with Ingka Centers Lycklig. We are many entities under the IKEA brand, and just to share, we have the retail, we have the sourcing or the purchasing, the Ingka Centers, we have a global business operation hub, we have a digital hub based on all the fantastic experience and competence in this country. We have IKEA Foundation, the philanthropic arm, and now lately the Ingka Investments also joining us to continue to build a long-term relationship in the country. So 80 years and of legacy built on a very strong culture and values that we share with the many Indians. I want to say we are here to create a better everyday life for the many people. That's the purpose we exist for, and that's what takes us out of bed every morning when we go to work. So we are creating a better everyday life for the many people, of course by giving solutions for a better home, which is also giving a better life. But beyond that, in the societies where we build our presence, we want to be a contributor in a positive way to make in India, to create job opportunities, and to do it in a sustainable way. IKEA and India, for a billion reasons. I'm very proud that we have so many connection points we have discovered over our 40 years in this country. We share the love for the home, and I think few people who are more home pride than the Indians. And they really use the home to celebrate and meet friends and family is large in India. Then living with children, 2/3 of the families in children at least live with children. And living with children is a long-term priority for IKEA. We have many solutions to support the life at home for the children's development. When I came to India the first time living and working here in 2007, I learned quickly, Paisa Vasul, that yes, you need to be careful with your spending, value for money. This is something in the core of IKEA and something we share with the Indians. We need to be affordable, to be for the many. To be affordable, we also need to operate on low cost, and that's an obligation we have. India is a very young country. 2/3 of the population is under 35 years. We are not so young with 80 years, but we are young at heart, and we are a modern, forward-looking, progressive company. We share the love for food, and when you come to an IKEA shop or store, you spend a lot of time because it's a lot to see, you get hungry, and then that's why we introduce food, and we also adhere to the Indian culture and try to combine both the Swedishness and the Indian into the food offer. And finally, diversity. In India, the most diverse country I've ever visited in culture, ethnicity, religion, colors, languages, festives, food, and we share the value of diversity. We know that's a very fundamental humanistic value. So where are we now with retail? We are present in 3 markets, in Hyderabad, which was the first market, then followed by Mumbai, and then Bangalore.
We are online also in Pune and Gujarat. We have a distribution center in Pune, and now the most exciting ahead of us is of course opening the Delhi NCR market, which will happen in the beginning of next calendar year, with the online to be followed by stores, one big in Gurgaon in 2026, and a mixed meeting place center as well. We are around 3,000 people, and we offer 8,500 home furnishing products for better life at home. Oh, sorry, now I need to go back. Almost. Back. Yes. So, IKEA in Uttar Pradesh, as I said, we have 40 years of being in India, and many of the suppliers come from the state of Uttar Pradesh. So currently we have 9 suppliers supplying 150 products that are also sold to 40 plus global IKEA markets. A lot, of course, based on the core strengths of India, textile carpets, but also decoration items, natural fibers, and other metal products. I myself visited with a lot of pride our carpet and textile suppliers in Uttar Pradesh many times over the years we have been here. So, coming to an end, we sincerely thank the government of Uttar Pradesh for its unwavering support, and UP's business-friendly policies and proactive approach have made our journey smooth and productive so far. Our commitment extends beyond offering an exceptional shopping and social experience. We are dedicated both for the people and planet, and actively pursue our global goal to become circular and climate positive by 2030. We are also committed to be a good neighbor by engaging in community initiatives around our project in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. We anticipate continued collaboration with your government as we advance with our endeavors. With its progressive outlook and economic growth and the private sector partnership, we are sure that Viksit Uttar Pradesh, Develop Uttar Pradesh, will be a cornerstone of a Viksit Bharat, Developed India. Thank once again the Honorable Chief Minister and his government. We look forward to continue to collaborate with you. Thank you so much. And thank you, Susanne, for your inspiring words. It is true that both, please be welcome. Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi, Honorable Minister for Industrial Development of Uttar Pradesh, Shri Nand Gopal Gupta, members of the IKEA family, delighted to see the head of the CEO of IKEA, the CFO of IKEA, Susanne Pulver, with us today, and of course, the global expansion head of Inca Centers, Sebastian Hilde. To be the ambassador of Sweden and to be here at the unveiling event is something very special, because IKEA has chosen the colors of my country. As you see here, blue and yellow. So somehow
this is Sweden in India and also India in Sweden. Lycklig is a name that has come up on the screen many times, and if you say it in Swedish, it means happy. And I'm honored and happy to be here at the Lycklig Noida unveiling ceremony today. Occasions like this really highlight how far we have come in our relations. 75 years of diplomatic relations, 280 Swedish companies are established in India, and 2 more are added every month. I'm very happy to be here today also with members from Business Sweden, because they are the ones, together with our Indian partners, who bring Swedish business to this country, but also Indian business to Sweden. IKEA, the story goes back to 1986, but the establishment of retail in India goes back to 2018, and I had the honor of visiting the first store in Hyderabad some time ago. And you see in everything that IKEA does, you see how sustainability comes into the equation, so to say. How vehicles that deliver products to customers or to the stores are electrified, electric vehicles. How everything is thought through in a way of being net zero. And your commitment when it comes to zero water discharge, when it comes to groundwater extraction policy of IKEA is also something that will contribute to the state of Uttar Pradesh. And you know, if you mix the 2 colors, I mentioned blue and yellow, if you mix them in a bowl, yellow and blue, it becomes green. So somehow that's also in the chemistry of my country and of IKEA. So the sustainable future of India, and India is doing so much. Uttar Pradesh is doing more than most when it comes to sustainability under the vice leadership of the Chief Minister. Together we can create a green future for this state, for India, and ultimately the world. When a multi-purpose center like this one that we are unveiling today comes to Noida, comes to Uttar Pradesh, it doesn't only bring what you will see with your eyes or what you will hear with your ears. It will actually add value to this place. It will add value to everything that is around this center. IKEA today, we saw Susanne Pulver said 3,000 employees. This center will add another 9,000 jobs in the area. And it brings an investment of 5,500 crores. The ultimate value will be even higher than that. IKEA, we heard, has been in India when it comes to the supply chain of the company since 1986. It brings us to the moment we have all gathered here to unveil Lycklig Noida. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परियोजना का अनावरण करने का निवेदन करता हूँ।
Sweden, Honorable Jan Estenle, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, मैं इसके लिए IKEA इंडिया को हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रुपए 5,500 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रस्ताव के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मेरे लिए यह एक अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि गत 7-7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश के और दुनिया के निवेशकों के विश्वास को अर्जित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। IKEA इंडिया उन्हीं निवेशकों में से एक है। खासतौर पर आज जिस निवेश प्रस्ताव के साथ यह शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें इंगिका की इस नई परियोजना में IKEA रिटेल स्टोर, होटल और ऑफिसेस के लिए स्पेस उपलब्ध कराने के साथ ही एक शॉपिंग सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी है। यह न केवल हमारे लिए एक निवेश है, बल्कि 9,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी। मुझे याद है जब 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास की नीति को बनाया था, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 5,500 करोड़ रुपए के इस नए निवेश के साथ 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार की नई संभावनाओं की गारंटी भी यहां पर प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 9.2% का अपना योगदान दे रहा है। यह वर्तमान में भारत की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को भी संबल देने के लिए आज आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश न केवल आज के दिन पर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन है, अपितु उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा मार्केट भी दुनिया के और देश के निवेशकों की दृष्टि से उपलब्ध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ
यहां पे देश का सबसे युवा आबादी भी निवास करती है, जो न केवल युवा ऊर्जा से बल्कि प्रतिभा से भरपूर भी है। आज का जो निवेश है यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक स्थापित करने में एक मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्ष के अंदर विकास और निवेश के एक नए युग में प्रवेश किया। इन 7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, निवेश की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना के रूप में उभर करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए रिफॉर्म और प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को भी कम करने में काफी मदद की है। नए नए निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं और अलग अलग सेक्टर की 27 नई सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज भारत के विकास के लिए अपने योगदान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर स्वीडन के माननीय राजदूत का और आगे इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इस नए निवेश को हमारे एनसीआर के नोएडा में यहां पर लागू करने का प्रस्ताव दिया और आज उसके शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह गौतम बुद्ध नगर जनपद भारत के अंदर अपनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है। बेहतरीन कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का क्षेत्र इस वर्ष के अंत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवाओं के साथ ही भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेहतरीन सुविधाओं से युक्त होकर के भारत के अंदर अनेक सुविधाओं से वहां के निवेशकों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह क्षेत्र लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी इसी जनपद में एक साथ उपलब्ध हो रहा है। मुझे बड़ा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, इस प्रदेश की इन संभावनाओं का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के हित में बल्कि भारत के हित में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में भी IKEA इंडिया और उनकी पूरी टीम उपलब्ध कराएगी। इस नए निवेश के जो प्रस्ताव आपने यूपी गवर्नमेंट को उपलब्ध कराया था, आज उसके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका यह निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि IKEA इंडिया के लिए भी फलीभूत हो, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, IKEA इंडिया को और उनकी पूरी टीम को इस नए ग्लोबल स्टोर के लिए नोएडा में नए होटल और ऑफिस स्पेस के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री, आपका बहुत बहुत आभार। You appreciated the contribution of our project to the economy and contributing employment, which was also the wish of Honorable Prime Minister. You mentioned that UP is not only a great place for investment, but also provides a big retail market and has skilled youth. In the last 7 years, UP has entered a new phase of infrastructure development, skill development, and various initiatives have been started towards this.